Mutation in the mouse have shown that there are two levels of regulation of right and left axis. First is the organ specific level, and second is a global level. Now, mutation in gene situs inversus viscerum, designated as small iv, randomizes the left right axis for each asymmetrical organ independently. The second level is called the global level, and gene called inversion of embryonic turning, designated as in small letters small inv, causes a more global phenotype specification of right and left axis. A possible pathway establishing the left right axis has been made after discovery of several different genes and after studying several mutation in the embryo. It has been observed that the activation of nodal proteins and PITX2, the transcription factor on left side of the lateral plate mesoderm, appears to be the same in frog and chick embryos, though the pathway is different. In mammals, the distinction between the left and right side begin in the ciliary cells of the node. The cilia or the ciliary cells present in the node causes the fluid in the node to flow from right to left. It had been long known that in human having dynein deficiency, they had immotile cilia and a random chance of having their heart on the left or right side of the body. When the IV gene was cloned, it was found to encode the ciliary dynein protein. When Nonaka cultured early mouse embryos under an artificial flow of medium from left to right, they obtained a reversal of the left right axis. The product of rotatin gene, which is essential for the expression of nodal lefty 2 and PTEX2, causes leftward motion of the cilia.
There are certain genes, mutation in them, or study of mutation in those genes have shown us that these mutation results in the reversal of right and left axis. There are two types of genes, one which specify right and left of the organ known as the organ specific level, and this gene is the situs inversus viscerum, जिसको हम स्मॉल आई वी से लिखते हैं, छोटा आई और छोटा वी द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये लेफ़्ट राइट एक्सेस को स्पेसिफाई करता है। दूसरा जीन जो है वो है इन्वर्जन ऑफ एम्ब्रियोनिक टर्निंग। ये जीन, इसको हम छोटे अक्षरों में आई एन वी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। राइट और लेफ़्ट स्पेसिफिकेशन नोड के अंदर उपस्थित जो सीलियरी सेल्स हैं उनके सीलिया के मूवमेंट से होता है। ये मूवमेंट राइट लेफ़्ट दिशा में जब होता है तो जो और एम्ब्रियो है उसके राइट लेफ़्ट एक्सिस का निर्माण होता है। ये देखा गया है कि अगर किसी ह्यूमन में डाइनिन डेफिशिएंसी होती है और सीलिया मूव नहीं कर पाती तो उनके अंदर जो ऑर्गन का फॉर्मेशन है राइट और लेफ़्ट, राइट में जो ऑर्गन बनते हैं, लेफ़्ट में जो ऑर्गन बनते हैं उसमें रिवर्स हो जाता है। और आईवी जीन को जब क्लोन करके देखा गया तो ये पता लगा कि आईवी जीन सीलियरी डाइनिन प्रोटीन को कोड करती है, यानी सीलियरी सेल्स के अंदर डाइनिन प्रोटीन पाया जाता है, उसके सीलिया में डाइनिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसके द्वारा सीलियरी मूवमेंट होता है। इसी प्रकार से नोनाका ने माउस में कल्चर करके देखा कि आर्टिफिशियल फ्लो अगर मीडियम का किया जाता है लेफ़्ट से राइट की तरफ तो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि राइट लेफ़्ट एक्सिस का रिवर्सल हो जाता है। When Nonaka cultured early mouse embryos under an artificial flow of medium from left to right, they obtained a reversal of left-right axis. लेफ़्ट-राइट एक्सिस का रिवर्स मिला, यानी जब सीलिया हमारा फ्लो करती है राइट से लेफ़्ट तो हमें लेफ़्ट-राइट एक्सिस मिलता है, और जब हमारी सीलिया फ्लो करती है राइट टू लेफ़्ट तो हमें लेफ़्ट राइट एक्सेस जो है वो मिलता है। इसी तरीके से रोटैटिन जीन का जो प्रोडक्ट है इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ नोडल लेफ्टी 2 एंड पिटेक्स 2 एंड कॉजेज द लेफ्टवर्ड मोशन ऑफ द सीलिया। ये सभी जो प्रोडक्ट हैं जीन्स के, उनके प्रोटीन भी यानी नोडल लेफ्टी 2 पिटेक्स 2, ये जो प्रोटीन प्रोडक्ट हैं इन जीन्स के, ये भी सीलिया के लेफ्टवर्ड मोशन को निर्धारित करते हैं। द लेफ्टवर्ड मोशन ऑफ सीलिया एक्टिवेट्स FGF8 जीन, और इसी प्रकार से सीलिया का लेफ्टवर्ड जो मूवमेंट होता है उसके द्वारा FGF8 जीन एक्टिव हो जाता है। जब FGF8 एक्टिव हो जाता है देन it activates the gene for 2 paracrine factor, that is nodal and lefty 2, in the lateral plate mesoderm on the left side of the embryo. FGF gene is a signaling gene, and this signaling gene activates 2 genes, nodal and lefty 2, and where in the
in the lateral plate mesoderm.